चलो ओके जी, just to test your indexing abilities, can you tell me what this command will do? A is some 2D array. A is a matrix. It's a 2D array. Can anybody tell me what this will do? So consider A has 5 rows and 4 columns. It's a two-dimensional array. This particular command inside क्या करेगी? Yes. So first of all, it will pick the third last row. Yes. The last row is -1. The second last row is -2, and the third last row is -3. So from there, it will pick all the next rows, which means the third row and the fourth row and the fifth row. It will pick these 3 rows, yes, because start from this and go till end. Make sense? So 3 rows pick होंगी, फिर उन 3 rows के जो columns होंगे वो reverse हो जाएंगे. Make sense? So let me give you yes, last 3 rows. So yeah, make sense? They are reversed. Is that okay? Great. This is just to get a refresher on indexing. क्योंकि आप होमवर्क कर रहे हैं उसमें अच्छी खासी इंडेक्सिंग है. इफ यू वांट टू यूज, अगर इंडेक्सिंग को अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आप अननेसेसरीली आपको लूप्स लगाने पड़ेंगे, विच विल मेक योर कोड स्लोअर. लेकिन जहां कहीं लूप लगाने हैं वहां लगाने, आई मीन you cannot completely avoid them, but try your best to avoid loops in Python. Okay. Can you tell me the shape of this? I have made a matrix, or basically this is a 4-dimensional array, 5 by 4 by 2 by 6. आप यूं समझ लें कि मेरे पास 2 by 6 का एक मैट्रिक्स है, और इस तरह के मेरे पास 4 मैट्रिसेस हैं, और इस तरह के मेरे पास 5 स्ट्रक्चर्स हैं. Make sense? So I have a 2 by 6 matrix. I have 4 of them, and then this particular thing I have 5 of them. Yes. So can you tell me what will be the answer here? Shape. Any idea? Sorry. Yeah. So basically you have 5 these kind of structures. So you pick the first one. You pick the second one with the index 1. So चाहे आप first pick करें, चाहे second, third, जो भी pick करें, you will end up this kind of a structure. Yes? Make sense? And then from that, you have now 4 of these. You pick the third one. चाहे आप third one उठाएं, चाहे आप second उठाएं, you will end up this kind of structure. So the result after this is 2 by 6. Make sense? So let me run this and see
Okay. Make sense? And that's another way of writing the colons. If you have, for example, a 10-dimensional array and you only want to access 1 or 2 indices and the rest are just all colons, you can just write 3 dots and everything is okay. That's a kind of a handy way of doing that. Make sense? Question? Okay. Okay. Can you tell me what is this doing? I mean, this command is doing a lot. So go one by one. What is happening? Eventually, what will be in the B? What will be B? Take your time, slow down, read from left to right and see what happens first. And then on top of that, what is happening? Then on top of that, what is happening and so on. Go this way. It's not easy, by the way. It's not easy. Okay. Yes, anyone? Yes. So let's go. I mean, B is. Do you think that B is like some other array like A or its flattened variant or something? It's reverse of A, but A is a 4-dimensional array. What do we mean by reverse of a 4D array? We know reversing a 1 dimension, but we do not know reversing how. What do we mean by reversing a lot of dimensions? Yes. ये मेरी बात समझ में आई ना? अगर एक डायमेंशन हो उसको रिवर्स करने का मतलब समझ में आता है. अगर मल्टी यानी अगर आप कहें कि A is a 4D array and B is reverse of that, ये बात समझ में नहीं आ रही, because that's a 4D array. What do we mean by reverse of that? Yeah. Anyone else? Sorry. Reversed. Okay, let me give you the answer, and then you figure out whether B is exactly A. Exactly A. B is a 4-dimensional array, just like A. It's A. Now figure out how. Okay, let me. जी बेटे आपका आंसर है, जी बताएं. A को flatten करेगा तो it will become a long array, 1-dimensional array. Yes. Hold on. एक एक करके बताएं. This thing will return a 1D array, which is the A flattened variant of A, which means 1D array. Yeah. Next. Okay. Then it will reverse the whole array, and the result is still 1D array. Yes. Then it will reverse again, which means the original form. And then it will reshape, which means A back. Yes. Yes.
Is that okay? Okay, great. One last thing, and then we will move on to today's topic. I is 1, J is 2, K is 0, P is 3. So just go with me. I is 1, that means the second structure. Yes. J is 2, which means the third structure out of this. Yes. K is 0, which means the first row. And P is 3, which means the fourth column. And that's the result. Yes. And because A and B, they're exactly the same, so you will see the same result. -2 increase place there, because these are randomly generated. You cannot verify until you see what is array A, but that's the result. Is that okay? सही है, चलें आगे. ये इमेजेस के बारे में आपने देख लिया था ऑलरेडी. अगर आपका असाइनमेंट के बारे में, कोई होमवर्क के बारे में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी. लेट्स से वी कैन स्पेंड 5 or 10 minutes on that if you have any questions. Otherwise I will move on to the topic today. If you have any questions about homework, if you're stuck somewhere, I'll happy to answer. So I guess you are doing very well. So let's move on. Okay. जो आज का टॉपिक है, that is kind of a linear regression. And अगर हमें टाइम मिल गया तो we will see बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एज वेल. अगर टाइम मिल गया, अगर नहीं मिला तो फिर हम लैब वाले दिन, जो फ्राइडे को आई गेस, we will cover these things there. But it's a difficult name of a very simple concept, linear regression. Don't be horrified by this equation. You'll get to know this equation piece by piece in a while. Okay. मैं आपको बजाय ये मैथ की इक्वेशन बताने के, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, वो आपने सॉल्व करना है. ठीक है. सवाल ये है कि आपने एक फंक्शन लिखना है जो एक वैल्यू लेगा x इज अ रियल नंबर, ये एक वैल्यू लेगा, और एक और वैल्यू लेगा y, और ये रिटर्न करेगा w such that x times w is equal to y. That's simple. That's not hard. Yes. If you receive two numbers, let's say x and y, x is a real number, y is a real number, and you're asked to return a number such that if I multiply that number with x, I get y. That's very easy. The implementation of function is straightforward. Looks straightforward at least. The implementation of the function is return y over x. Yes. And obviously there are if conditions कि अगर x 0 है तो return division by 0 is not allowed, no such w वगैरह वगैरह. So with input checks, if the input checks are okay, the implementation of this function is straightforward. Return y over x. Yes? Make sense? Is that okay? Okay. Similarly, we can have, for example, I can ask you to have another function that receives, rather than one x, it receives two values, x1 and x2, and then y. Okay. And then the goal of it returns w1 and w2, two numbers, such that w1 x1 plus w2 x2 becomes y. So take two numbers, take three values, x1, x2, and y, return two numbers such that the two numbers must have this property. Yeah, is that okay? Can you implement this function? Yes, no? Can you have this w1 and w2? By the way, the answer needs not to be unique. हो सकता है एक बंदे ने implement किया हुआ हो, एक स्टूडेंट ने,
तो उसके W1 W2 फर्क हो और दूसरे के W1 W2 फर्क हो, but as long as a W1 W2 satisfies this criteria, every such W1 W2 pair is a solution. Okay, so what do you think? What should be the implementation of this function? Sorry. Yeah, you can generate random number, or maybe you can just fix W2 to a particular number. Let's say fix W2 to be 1, or any number. Just take W2 as some fixed number, and then W1 will be y minus W2 x2 divided by x1. If you have fixed W2, any number, you can find out W1, not a big deal, and you can return that pair. अब अगर एक स्टूडेंट ने W2 को 1 फिक्स किया है तो उसका रिजल्ट फर्क होगा. अगर दूसरे ने W2 को 0 फिक्स कर दिया या -5 फिक्स कर दिया या कोई भी वैल्यू फिक्स की है, because there are many solutions, there are many pairs W1 W2 that satisfy this equation. There are a lot of solutions and all can be valid as long as they are satisfying this. Yeah, okay. So far so good. Yes, any questions? Okay, great. Okay, now you are going to implement this function, and it should return 3 W's, W1, W2, and let me call a third one W0. You can change the order while returning, no problem. But these three should have this property. W1 x1 plus W2 x2 plus W0 is equal to y. Now, can you find out this triple W1, W2, W0? Yes, you can fix W0 to some value. Then you can again fix W0 to some value, W2 to some value, and then you can find out what W1 is and just return that triple. And different students can come up with different results. That's okay. So far, so good. Any questions? Yes? Yeah, sure. So is that okay? Yes. So next, if this is okay, then I'm going to ask you a little bit complicated function, a little bit complicated. That is, you have now rather than having just x1 and x2, now you have 2 points, x1, x2, and then another x1, x2. I'm calling then x11, x21, and then x22, x22. And correspondingly, you have two y's, y1, y2. It's okay. You are just giving arrays in the function. Yes, but interpret the first row of this corresponding to this value. The second row of this matrix corresponds to this value. Okay, so far so good. Now your goal again is to return W0, W1, W2, but these W0, W1, W2 must satisfy the following criteria. Previously, we were having only one criteria. Now we will be having two criteria. Let's see. W0 plus, either way, आप W0 को पहले लिख लें, बाद में लिखें, doesn't matter. W1 x11 plus W2 x21 is equal to y1 and
the same W's should be able to do this. Okay, this is tricky. This is not simple. The reason, अगर एक इक्वेशन थी हमारे पास, एक क्राइटेरियन था जिसको फुलफिल करना था, we could fix some W's and then find the other one. But now the same W's should satisfy the other criteria too. We do not have a luxury to have different W's for different equations. No, the same set of W's, they should satisfy all the equations. This is tricky. Meeting all the constraints, that is tricky. And sometimes impossible. Sometimes impossible. Think for example, if for example I pass x11, if I pass x11 as 2 and x22 as, let's say 3, and y1 is, let's say 7, and then I pass this, these are just some values I'm giving. If x11 is 2, x21, the first row is, let's say 2, 3, and 7, and the second row is, let's say 4, 6, and let's say 11. As you can see, then I can claim that there does not exist any W's that satisfy both of the criteria. I can claim that. Yes. And that claim can be very easily verified. If you can see, I can rewrite the first equation, the second equation, by dividing by 1 by 2 both sides. Sorry, this is, so this is 2. Yeah, this is 2. This is 2. This is 2, this is 2, yeah. So W, no, I'm not allowed to touch this. This is just the same thing. So let me make it a little bit simpler. Let's say we do not have, let's say we are not considering W0 for now. Let me make it a little bit simpler. We are not considering W0 for now. We have just W1 and W2 to fix, such that they carry out this thing. Now, if you see these two, I can rewrite the second equation as, if I divide both sides by 2, the second equation becomes (11/2), which is like 6.5, 5.5. अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर मैं पहली इक्वेशन भी साथ लिख दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई W1 W2 एग्जिस्ट नहीं करते कि W1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और W2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कभी वो 7 आए, कभी वो 5.5 आए. ऐसा पॉसिबल नहीं. मेक सेंस? सो जब आपके पास एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स होंगी, इक्वेशंस को कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स होंगी तो जरूरी नहीं है कि कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो. सोल्यूशन से मुराद ये W1 W2, ये जो भी ट्रिपल है, या 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, जितनी भी हैं. मेक सेंस? मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करें? अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करें? यानी अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होता तो क्या होता? अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होता तो W1 x11 प्लस W2 x21 माइनस y1 0 होता. ऐसा ही है अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होता. W1 x21 प्लस W2 x22 माइनस y2, ये भी 0 होता अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता तो. यस, मेक सेंस? यानी अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता
तो इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का सम 0 होता। This is 1 2, this is 1 2, this is 1 2. Is that okay? Yes, yes. ऊपर मेरा ख्याल है सही है। 1 1 2 1 1 2 2 2. I guess that's यहाँ पे, yeah, this is 1 2. But I guess you get the point. ये इंडेक्स लिखते हुए मुझे गलती होगी, but you get the point. Yes. अच्छा, अगर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर ये चीज भी 0 है, ये चीज भी 0 है, यानी इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तब भी 0 है। यस। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इनमें से कोई एक, कम से कम एक ऐसा है जो 0 नहीं है। हो सकता है सारे ऐसे हों, लेकिन कम से कम एक ऐसा है जो 0 नहीं। यस, क्लियर है? तो अब मैं अगर इनको ऐड करूंगा तो सम विल नॉट बी 0। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर दोनों 0 नहीं है, बिलफर्ज W1 W2 मैंने ऐसे उठा लिए कि पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहली इक्वेशन का जब मैं रिजल्ट निकालता हूं, दिस रिजल्ट बिकम्स -5, और दूसरी का जब मैं रिजल्ट निकालता हूं, दिस बिकम्स 5। अब पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं कहूं अच्छा मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो रिजल्ट इज 0, और वहां से मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, दिस इज रॉन्ग। मेक सेंस? क्लियर है? ओके, great. So what I can do is I can add, yeah, if this value by the way, इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को एक टेक्निकल नेम है, इसको कहते हैं एरर। यानी मैंने W1 W2 ऐसे सेलेक्ट किए कि जो मैचिंग थी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, वो मैचिंग पॉसिबल नहीं हुई, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एरर इन बिटवीन, अ गैप एरर। मेक सेंस? If the error in the first equation is -5 and the error in the second equation is 5, obviously none of the constraints has met, कोई इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन अब अगर मैं दोनों एरर्स को प्लस करूं और निकालूं टोटल एरर विल बी 0, बिकॉज -5 + 5 is equal to 0. इज दैट ओके? जब टोटल एरर 0 होगा तो आई कैन कंफ्यूज माई सेल्फ कि अच्छा सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं, 0 0 0 0 एंड द सम इज 0। हालांकि W1 W2 they don't even satisfy a single equation. Make sense? ये बात, मेरी बात समझ में आ रही है? So what should be the fix of it कि मैं टोटल एरर को देखूं and I get a look and feel कि W's कितने बेहतर है टोटल एरर को देख के। मेरी बात समझ में आ रही है? In that case I have to first, I mean, अगर मैं इस पहली वाली क्वांटिटी को E1 कह दूं, यानी दिस इज सिंपली दी सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दैट, और दूसरी क्वांटिटी को E2 कह दूं, एरर 1 एंड एरर 2, then E1 plus E2, this is not giving me much information about the W's I have selected. जो W's मैं लेके आया हूं उसके हवाले से ये मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। But if you see this thing, absolute value plus E2 absolute value, if this is 0, that means my W1 and W2 are awesome, because all the equations have been satisfied. Is that okay? This should be clear to everyone. If not, we can spend time on it. You can ask. Okay, and similarly, we have added absolute errors. We could add squared errors. That also looks like the same. I mean, if the sum of squared errors, if that is 0, that means all the equations are satisfied. If the sum of absolute errors, that is 0, we know that all the equations are satisfied. Whatever W1, W2 we came up with, they are the best. Make sense? Yes? Now, in this particular situation, for example,
there does not exist a W1 and W2. No matter what you do, there does not exist a W1 and W2 that gives the sum of absolute errors or sum of squared errors to be 0. Because no W1, W2 exist to solve, to satisfy all the equations. In that case, we say, okay, अब जो ideal solution है वो possible ही नहीं है. What best we can do? What best we can do? देखें, अगर मेरा sum of errors 0 होता है तो I am good. सही है, क्योंकि errors जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है. अगर ये 0 possible नहीं है, I want this to be as minimum as possible. यानी I have to live with some solution. I have to live with some W1 and W2. 0 error is not possible. What is the best I can do? Well, whatever W1, W2 that minimizes, that gives the total error as minimum as possible. Is that okay? Yes? Okay. So that means if I just, that means if I have E1 plus E2, let's say I have n equations and I square them all. Yes, that's a number, final number. You can call it E as error. People in data science or machine learning, they also call this as a loss. Error means loss. So you can call error or loss, either way. Yes? This error, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये error कम या ज्यादा होएगा, कौन सी चीजें अगर मैं चेंज करूं तो ये कभी कम आएगा? एरर खुद एक फंक्शन है ना. अगर मैंने एरर कंप्यूट करना हो, मैं W1, W2 की एक पेयर भेजूंगा तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी एरर की. अगर मेरे पास n इक्वेशंस हो, मैंने 2 रोज भेजी थी ना, अगर मेरे पास n रोज हो, मैं 100 डेटा पॉइंट्स भेज दूं, x1, x2, they are 100 of those and correspondingly 100 y's, and now I demand W1, W2 that satisfy all of them. Make sense? What W1, W2 should I send to keep this error as minimum as possible? देखें, अगर मैं W1, W2 की एक खास वैल्यू भेजता हूं तो इस टोटल एरर की कोई वैल्यू आएगी 35 या 45 या I mean 87 or something. Yes? अगर मैं W1, W2 चेंज करूंगा तो कोई और वैल्यू आ जाएगी. Yes? There are a lot of W1, W2s I can try. One of them or few of them will be the best. So this E, in fact, depends upon the choice of W1 and W2. So you can think of this E as a function of W1 and W2. That's a function. Function होता क्या है? अपने arguments पे depend करता है. जिस तरह के arguments आप देंगे, उस तरह behave करेगा. तो E itself is a function. Its arguments are W1 and W2. Yes. Yes. No, data is fixed. X and Y you have no control over. Somebody gave you data. These are X's, these are Y's, corresponding Y's. Now find me W1, W2 that is ideal. So you're not, so data is fixed. If data is not fixed, that is also a variable. But data is fixed here. It's a good question. मेरी बात समझ में आ रही है? Any questions so far? Is that okay? Okay. अब मैं W1 और W2 को चेंज करता हूं तो कोई रिजल्ट आएगा, फिर W1, W2 को चेंज करूंगा, कोई और रिजल्ट आएगा. I want, अब ये गौर से सुनिएगा ये जुमला, I want W1 and W2 that makes the squared error as least as possible. तो इस तरह का W1 और W2 जो आप भेज दें, जो टोटल स्क्वायर्ड एरर को, यानी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, उसको मिनिमम कर दे, तो इस मेथड को कहते हैं लीस्ट स्क्वायर्ड एरर सॉल्यूशन. एंड इट मेक्स सेंस. Squared error means the errors are squared, not absoluted. The errors are squared.
and then I want to find out W1, W2 so that the total error becomes as least as possible. Least squared error solution. इसी तरह least absolute error solution भी होता है अगर आप absolute errors use कर लें. मैं यहाँ पे squared error use कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ? I will tell that. Clear है? So the error we will be using is squared error. आप पूछ सकते हैं कि यार absolute error क्यों नहीं use कर रहे? उसकी जो रीजन है वो या आज के लेक्चर में या इंशाल्लाह लैब के अंदर क्लियर हो जाएगी. Why we are not using absolute errors? Why we are using squared errors? Yes. ओके ग्रेट. सो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और हम इस इक्वेशन को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि आगे अगली वाली स्लाइड पे जस्ट इसका कोड है एंड वी विल बी ओके. सही है, जरा गौर से देखिएगा. मैं इस f को फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ 2 के साथ और इसके ऊपर ये मैं स्क्वायर लगाना तो लगा ले, नहीं लगाना तब भी ठीक है, स्क्वायर लगा रहा हूँ. चलें अब जरा गौर से देखिएगा. व्हाट इज x? x इज बेसिकली x1, x2, x3, x4 मेरे जितने भी x's हैं. लास्ट टाइम मैंने जो एग्जाम्पल चूज की थी उसमें मैंने 2 x लिए थे, लेकिन मेरे पास ज्यादा भी हो सकते हैं. यस, जितने भी हैं. सो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो एंड सो ऑन. यस. सो अगर मैं इस मैट्रिक्स का साइज देखूं तो ये जितने डेटा पॉइंट्स हैं n डेटा पॉइंट्स बाय मेरे पास जितने x वैल्यूज हैं, ये जितनी x वैल्यूज हैं इनको डेटा साइंस के टर्म्स में फीचर्स भी कहते हैं. मेरे पास जितने फीचर्स हैं, बहरहाल आप उसको देख लेंगे कितने x वैल्यूज हैं. दैट इज d, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ x n by d. yes, w contains w1, w2 dot 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 wd. That's a vector or the column vector array. It's an array with d values, and you want to find out all these d values such that the squared error become minimum. Is that okay? And then the y is the corresponding values for column vectors, column vector of the corresponding values. So ये बड़े ध्यान से देखिएगा. x is n by d, w is d by 1 and y is n by 1. और अगर यहां गौर से देखें, it becomes n by d into d by 1. The total result becomes n by 1. Yes, and this y is n by 1. When you subtract a vector from another vector, you eventually get n by 1. And these are all the errors. This is the vector of errors. Yes. अभी आप गौर से देखें, आप क्या कर रहे थे. आपके पास अगर एक वैल्यू होती, लेट्स से x1, x2 डॉट डॉट xd, और आपके पास w's होते, फॉर एग्जांपल w1, w2 डॉट डॉट wd, तो आपने इनको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना था ना. Yes, one way of doing that is consider this as a matrix 1 by d and consider this as a matrix d by 1, and then just matrix multiply them जैसे matrices multiply होते हैं. So row times column, and that exactly becomes the same thing. w1 plus w1 into x1 plus w2 into x2 and so on, and that becomes equals to y1. Is that okay? अगर मैं ये जो मैट्रिक्स है इसको इसमें सेकंड रो भी डाल दूं, थर्ड रो भी डाल दूं, फोर्थ रो भी डाल दूं, it will become capital X. First row times w will become first y1, second row times w becomes y2 and so on. So this is my equation. Actually these are n equations now. Make sense? And if I do this, I'm subtracting the first left hand side
to the first right hand side, then the second one to second, and so on. So this is an array or vector of errors. Yes. अगर मैं हर एरर का यानी इस वेक्टर के हर एक के स्क्वायर लेके ऐड कर दूं, दैट इज अ स्क्वायर्ड एरर, टोटल स्क्वायर्ड एरर. यस. और आपको पता है, आपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर एक वेक्टर हो आपके पास, लेट्स से 2 3, और उसकी आपने मैग्नीट्यूड निकालनी हो, इसको नॉर्म भी कहते हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? आप पहले को स्क्वायर लेते हैं, दूसरे को स्क्वायर लेते हैं, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. और अगर मैंने मैग्नीट्यूड स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर रूट नहीं लेते. यस. तो अगर ये जो वेक्टर है, यानी अगर ये वेक्टर हो मेरे पास v, सो v नॉर्म या v मैग्नीट्यूड ऐसे कहते हैं ना इसको, और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो दिस, ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है, दिस इज आउट. ये जो एरर्स का वेक्टर आया है, अगर इसकी आप नॉर्म ले लें और फिर उसका स्क्वायर ले लें, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स. क्योंकि हर कंपोनेंट का आप स्क्वायर ले रहे हैं, फिर सारे सबको ऐड कर रहे हैं. यस. मेरी बात समझ में आ गई? अब इस इक्वेशन को दोबारा जरा ध्यान से देखें. यू वांट टू फाइंड आउट W, you want to find out W that minimizes the squared error. कौन सा W उठाना है पता नहीं, but we want to find out the W that minimizes the squared error. और ये जो एरर फंक्शन है, दैट इज एक्चुअली, ये इसको लॉस भी कहते हैं, एरर भी कहते हैं, कुछ भी कह लें. क्लियर है? मेक सेंस? यस, नो? एक छोटा सा पॉइंट में और आपको बताता चलूं, और फिर हम कोड की तरफ चलते हैं. गेस आई हैव सम टाइम. यस. ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्लाइंट डेटा सेट दे, यानी एक्स और वाई पेयर्स दे, और कहे कि डब्ल्यूज ढूंढो और मुझे टोटल एरर बताओ. और एक स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट 1, और एक स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट 2. दोनों के डिफरेंट क्लाइंट्स हैं. एक क्लाइंट उसको डेटा सेट देता और कहता मुझे बेस्ट डब्ल्यूज तुम ढूंढो, मुझे मिनिमम एरर चाहिए. और दूसरा क्लाइंट भी स्टूडेंट 2 को यही काम दे रहा है. सही है. अब क्लाइंट 1 ने जो डेटा दिया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स थे, यानी टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल्स थे, कॉरेस्पॉन्डेंसेस थी, वो थी 10. x was having 10 rows and correspondingly y was having 10 values. जो क्लाइंट 2 था, उसने जो डेटा सेट दिया, उसमें 1000 रोज थी. 1000. मेरी बात समझ में आ रही है? क्लाइंट 1 जिसके पास सिर्फ 10 डेटा पॉइंट्स थे, यानी सिर्फ 10 रोज थी, he struggled and find out eventually the W's and find out the total error. स्टूडेंट 2 ने भी निकाल लिया टोटल एरर. अब चूंकि हर इक्वेशन कोई ना कोई एरर दे रही है, कोई ना कोई एरर कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर इक्वेशंस थोड़ी होंगी तो टोटल एरर कम होगा. यस. अगर इक्वेशंस बहुत ज्यादा होंगी, चूंकि हर इक्वेशन कोई ना कोई एरर कंट्रीब्यूट कर रही है, द एरर विल टेंड टू बी लार्ज. अब स्टूडेंट 2 खप रहा है, स्टूडेंट 1 कह रहा है मेरा एरर तो बहुत थोड़ा है, स्टूडेंट 2 कह रहा है मेरा तो, यानी स्टूडेंट 1 इज सेइंग मेरा तो ये देखो, ये एरर 0.3. वो बेचारा लगा हुआ, यार मेरा तो 40 से नीचे नहीं आ रहा, मैं खप गया हूं. The reason for that, one is using more data points, one is using less data points. आपके पास जितनी इक्वेशंस हैं, आपका टोटल एरर उससे स्केल होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए. अगर एक बंदा 10 इक्वेशंस यूज कर रहा है तो उसका एरर 10 के लिहाज से होना चाहिए. अगर एक 1000 यूज कर रहा है तो उसका एरर 1000 के लिहाज से होना चाहिए. सो इट इज अ गुड थिंग टू नोटिस दैट द एरर, rather than reporting this, you divide this by the total number of data points. Scale it. Now the comparison is fair. Yes. इसका नाम क्या होना चाहिए इस एरर का? इस एरर को कहते हैं स्क्वायर्ड एरर. इसको कहते हैं स्क्वायर्ड एरर. अगर मैं ये कर दूं तो इसका नाम क्या होना चाहिए? आपने अगर नाम रखना होता क्या रखते? एवरेज स्क्वायर्ड एरर. और उसको स्टैटिस्टिक्स वाले कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर. क्लियर है? सो इट इज गुड टू रिपोर्ट मीन स्क्वायर्ड एरर रादर देन स्क्वायर्ड एरर, बिकॉज अगर डेटा सेट के साइजेस डिफरेंट हैं तो इट विल स्केल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स. इज दैट ओके? सो फॉर सो गुड.
ओके, एक आखिरी चीज जिसके बाद मैं कोड की तरफ फाइनली जा रहा हूं, वो ये, what if you want to add this W naught also? ये अगर W naught भी ऐड करना हो तो क्या करेंगे? आप ये जो W आप बनाएंगे, इसके अंदर आप W naught अपेंड कर दें टॉप पे, यानी आप इतने एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये जो X है आपका, एक कॉलम ऐड करना, एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। वो कॉलम कहां पे इंसर्ट करना है और उस कॉलम की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? अगर मैंने W नॉट स्टार्ट में रखा हुआ है तो वो कॉलम बिल्कुल स्टार्ट में होगा और उसकी वैल्यूज 1 होंगी। मेक सेंस? This will be multiplied with every W naught and W naught will be added to the rest of the things. अगर W naught बिल्कुल एंड पे लगाएंगे तो W naught जिस जगह पे W naught आपकी जितनी टर्म होगी उतना कॉलम आपको वंस का इंसर्ट करना पड़ेगा। The convention is कि आप स्टार्ट में रखें W1. Is that okay? Yes? Awesome. We are now ready for the code of, by the way, this whole procedure to find out W is called linear regression. Linear regression. Why this is called linear, why it is called regression, maybe I'm not going to in the details right now, because I guess you have to study linear algebra and then you will be able to find out what is. Why don't I tell you what is linear? It's simple. If you have a function, let's say x and y, something, let's say 2x plus y, maybe, and the function may report multiple values. So x minus 3y, maybe multiple values. You can have a function that returns multiple outputs. Yes? If you can rewrite the function in such a way, this is the output of the function. This is the output of the function on the input x, y. If you can rewrite a function such a way that the output becomes some matrix times the input. Remember the input here, I can rewrite this input as x, y in the form of matrix. Okay, that's the input. On this input, this is the output. If you can rewrite any function such that the output can be written in the form of some matrix times input, then that function is called linear. And vice versa. Every linear function can be written in this form, and this form corresponds to a linear function. Yes? So can you tell me this function is linear or not? It is linear because I can write 2x plus y, x minus 3y as some matrix times the input, and the input is xy. And 2, 1, 1 minus 3. So this is a linear function. Remember, ये जो matrix है इसके अंदर कोई variable नहीं आना चाहिए. x, y में से कोई इसके अंदर नहीं आना चाहिए. It's a matrix of constants. It's a linear function. Yes? जरा गौर से देखिए. xw, these w's are my variable for error function. This x is some matrix, so it tells me that this is a linear function. मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, but this is the reason why it is called linear. और फिर regression क्या होती है, I'm not going into that detail. Maybe in the lab we will discuss that. Yes?
Is that okay? Great. Nice. और ये F मैंने क्यों लिखा हुआ था, इसकी डिटेल भी मैं आई एम स्किपिंग दैट। इसकी डिटेल भी मैं इंशाल्लाह अगर लैब में मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा। दिस इज फ्रोबेनियस नॉर्म, लेकिन मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। दिस इज द मोर जनरल फॉर्म। ओके, मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस, it receives x and y, and remember this x has these ones appended in some column. ये x के अंदर ऑलरेडी 1 अपेंड हुआ है और y कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। यस, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया, दीज आर नेस्टेड फंक्शंस। जरा गौर से देखिएगा, एक फंक्शन होता है, उसको उसमें से आप कुछ रिटर्न करते हैं तो वो जो रिटर्न करते हैं वो बाय रिसीव होता है। यस, अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आप इसको गौर से देखें, दैट इटसेल्फ इज अ फंक्शन। यस, और ये फंक्शन एग्जैक्टली वही है, numpy और लीनियर अलजेब्रा डॉट नॉर्म। ये जरा इक्वेशन आपने बड़े गौर से देखी भी है, दैट्स अ नॉर्म, ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है। यस, इज दैट ओके? सो ये तो वो एरर कंप्यूट कर रहा है जो टोटल एरर है, एरर रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये खुद एक फंक्शन है। और आपका ये आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। जरा गौर से देखिए, आपने आउटर फंक्शन कॉल, आपने तो आउटर फंक्शन कॉल करना है ना, आपको तो एक्सेस एमएससी लॉस की है, इसके अंदर जो फंक्शन है उस इंप्लीमेंटेशन की एक्सेस तो नहीं है, बाहर बैठेगा आपको। आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया बाय गिविंग एक्स एंड वाई। यस, इस फंक्शन ने अपने अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन की और वो जो भी जवाब था वो रिटर्न कर दिया। इनफैक्ट इसने जो रिटर्न किया दैट इज एन एरर फंक्शन, उसको खुद W चाहिए टू सेट द वैल्यू। इस ये जो रिटर्न कर रहा है, इट रिक्वायर्स W टू टेल व्हाट द फाइनल एरर इज। समझ आ रही है? लेट मी शो यू दिस। ओके, ये जरा गौर से देखिएगा। नंबर ऑफ सैंपल्स मींस द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, इस केस में हम 1000 सैंपल्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ फीचर्स which means the number of x's, x1 x2 x, how many are these? 100. Okay, so we are just generating a data set randomly. We can pick a data set from some client or somewhere, but it will be having eventually this kind of form. Yes, then we are generating some random values. हमें x और y दोनों मिलेंगे, x और y कॉरेस्पॉन्डेंसेस मिलेंगे। और UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी पे अगर आप जाएं, ये पे गूगल में लिखें UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, उसमें आपको ढेरों इस तरह के डेटा सेट्स मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करें, यू हैव x, y। सही है? सो इफ यू वांट टू प्ले विद द रियल डेटा सेट्स, जो हम न्यूरल नेटवर्क्स का एग्जांपल करेंगे उसमें रियल डेटा सेट ले लेंगे। यस यस यस, सो x will be coming from some file and y will be coming from some file. Yes, okay. अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 1 अपेंड कर रहा हूं ना x में, तो ये h स्टैक है, हॉरिजॉन्टल स्टैक, यानी मेरे पास x है 1000 बाय 100 का, तो मैं हॉरिजॉन्टली स्टैक करता हूं वंस का एक वेक्टर उसके लेफ्ट पे। 1000 बाय 100 का क्या मतलब? ठीक, सो मैं एक वंस की एक अरे बनाता हूं जो 1000 बाय 1 की है, 1000 बाय 1 की, और उसको और x को आपस में हॉरिजॉन्टली स्टैक कर देता हूं, तो वंस जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे। ये एक चीज जरा ध्यान में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक, कंकैटिनेट, इस तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं numpy में, जिसमें आपको लुक एंड फील ये मिलेगी कि आप अपनी अरे को एक्सटेंड कर रहे हैं, वो बड़ी होती जा रही है। यानी आप स्टैकिंग करेंगे तो अरे बड़ी होगी ना, और अरे बड़ी होगी। Don't use these functions more often because numpy will create an other array and copy everything there. There is no extension in numpy arrays.
नंपाई अरे का साइज फिक्स होता है जब आप बनाते हैं, जब आप उसको एक अपेंड करने की या एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, इट क्रिएट्स अ न्यू अरे एंड देन कॉपी ऑल द डेटा इनटू दैट, एंड दैट इज अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। x1 तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा है जो जिसके साथ वन अपेंडेड है, बट दिस ऑपरेशन अगर ये किसी लूप में आप लगा दें, लूप में आप डेटा सेट आ रहा है और आप एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, आपके पास एक एक रो आ रही है कहीं से, तो आप एक मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, उसका साइज एक रो का लेते हैं, फिर उसको अपेंड करना शुरू कर देते हैं वो या लाइक सो, सही है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ रोज पहले से पता है या पूरा साइज पहले से पता है, डिक्लेयर दैट साइज अरे एंड देन जस्ट कॉपी देयर, डो नॉट यूज एच स्टैक। अगर एक आध ऑपरेशन कभी करना है ये वो, देन डोंट यूज दिस इन अ लूप। और आपने एक एंट्री इसमें और ऐड करना तो क्योंकि वो नई अरे बनाएगा तो एक जीबी प्लस वन साइज की अरे बनाएगा और पुराना एक जीबी तक कॉपी करेगा, मार जाएगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट मे टेक डेज टू कंप्लीट। ये आप जाके डेटा सिस्टम में कुछ भी पढ़ेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, वो बड़ी जरूरत बात है, अगर आपको साइज पता है तो आप पहले ही साइज का एलोकेट कर और इंडेक्स के थ्रू वहां पर रखा। या एग्जैक्टली। So far so good. Now we have x1, which means x is appended there, and we have y's. Now we can call this function mse loss. अगर इस फंक्शन को आप देखें तो उसको x और y चाहिए, उसको x और y मिल गया, वो हमें इस फंक्शन का हैंडल रिटर्न कर देगा जिसको अब w चाहिए। यस, हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया, मैं इसको लॉस फंक्शन कह रहा हूं। अब मैंने एक रैंडमली एक w इनिशियलाइज किया, कोई रैंडम w, और ये देखे मैंने नम फीचर्स +1 कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने 1 अपेंड किया हुआ था तो w नॉट भी ऐड करना है, याद है। तो मैं कोई रैंडम w's ले रहा हूं, चेक करता हूं यार ये वाला w कितना बेहतर है, यानी ये अरे ऑफ w's कितनी बेहतर है, मैं रैंडमली नहीं होना चाहिए ऐसे, ये कितनी बेहतर है, आई एम गोइंग टू चेक दैट। और मैं चेक कैसे करता हूं, मैं लॉस फंक्शन में वो w पास करता हूं, एंड नाउ द लॉस विल बी रिटर्न्ड। यस, सो लेट्स सी 328, ये MSE है, मीन स्क्वायर लॉस, दैट्स टू मच। अगले पे अब दोबारा कोई, यानी एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको कोई कहे कि यार मुझे w ढूंढ के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, आई मीन 101 वैल्यूज हैं जो आपने ढूंढनी है, w0 से लेके there are 101 values that you have to find out which one is the best। बेस्ट का कैसे पता चलेगा, दिस लॉस फंक्शन विल रिटर्न अ मिनिमम वैल्यू, और जो वैल्यू रिटर्न हुई है पता नहीं उससे भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, यू डू नॉट नो। सो एक तरीका क्या हो सकता है कि रैंडमली करते रहें, सेव करते रहें, मिनिमम को सेव करते रहें जो अब तक का मिनिमम आ गया है, करते रहें, या रैंडमली नहीं चलाना तो कोई किसी तरीके से डब्ल्यूज को चेंज कर लें। तो दीज आर 101 वैल्यूज, समझ आ रही है। अगर सिर्फ दो वैल्यूज होती, w1 w2 सिर्फ दो वैल्यूज होती, और दोनों पे ये रिस्ट्रिक्शन होती कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों पे ये रिस्ट्रिक्शन होती कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, फॉर श्योर इंटीजर्स हैं, और ये भी रिस्ट्रिक्शन होती कि ये वैल्यू -100 से छोटी नहीं है, 100 से बड़ी नहीं है, तो फिर शायद आप कर लेते, आप नेस्टेड लूप लगाते, w1 का लूप लगाते -100 से लेके 100 तक इंटीजर स्टेप्स के साथ, w2 का लूप लगाते -100 से 100 तक इंटीजर स्टेप्स के साथ, और हर w1 w2 को ट्राई करते, और इवेंचुअली जो लॉस, जो w1 w2 पेयर लॉस मिनिमम देता, आप कहते दैट्स द बेस्ट वन, और वो एग्जैक्टली बेस्ट होता, बिकॉज यू हैव सर्च्ड एवरीथिंग। समझ आ रही है। यहां मुसीबत ये है कि ना तो ये इंटीजर्स हैं और ना इनकी कोई बाउंड्स हैं, वी कैन नॉट अप्लाई लूप्स, और बिल फर्ज अगर 101 वैल्यूज पे इंटीजर बाउंड्स होती भी तो नेस्टेड लूप लगता है 101 नेस्टिंग्स के साथ। समझ आ रही है। अगर इंटीजर बाउंड्स होती, अगर आप कह रहे हैं w1 की वैल्यू 5 है, एक्चुअल वैल्यू हो सकता है 5.2233994 होती, दैट यू आर नेवर चेकिंग। समझ आ रही मेरी बात की। यस,
W की वैल्यू 0 भी हो सकती है। Let's see. Let's see. That's a good point. Oh, all zeros. Awesome. इससे भी कम हो सकता है, और ये सारे जीरोस इसलिए हैं कि मेरे जो ओके इनको खराब करते हैं जी। क्योंकि मेरे जो आउटपुट्स हैं वही सारी छोटी छोटी हैं, वो नंबर्स वाइज, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा सारे वाइज को ऐड कर दो आपस में। समझ आ रही है ना? मेरे जो वाइज थे दे आर वेरी स्मॉल वैल्यूज। मैं कह रहा हूँ फॉरगेट अबाउट डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू को वैसे ही जीरो कर दो, तो होगा क्या, इवेंचुअली सारे वाइज आपस में स्क्वायर होकर ऐड हो रहे होंगे ना। अगर वाइज छोटे छोटे हैं टोटल एरर जीरो होगा। समझ रहे हैं? दैट्स नॉट आई वांट। चलें इसको 100 ही रखते हैं जी। अब मैं कोई रैंडम एरर निकालता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ओ, समझ रहे हैं? जो सर्चिंग मैंने करनी है ना, जो सर्चिंग मैंने करनी है, इट्स अ बिग जंगल फ्रॉम वेयर आई एम सर्चिंग। समझ आ रही है बात की? जरा 101 नेस्टेड लूप सोचें। W नॉट वेरीज फ्रॉम दिस टू दैट। और हाइपोथेटिकली सोच लें, हाइपोथेटिकली एक दफा सोच लें कि फर्ज करें आपको लूप लगाना आता है रियल नंबर्स के ऊपर। फर्ज करें, हालांकि नहीं आता। हम स्टेप क्या रखेंगे? रियल नंबर्स के ऊपर लूप क्यों नहीं लग सकता? हमें स्टेप साइज नहीं पता। जो भी स्टेप हम रखेंगे उतने नंबर्स हम जंप कर जाएंगे, बीच वाले नंबर रह गए, बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूअस। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्ज करें, फर्ज करें आपको कोई मिनिमम स्टेप भी पता है और कोई ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन पता है जो नियर बाय स्टेप्स लेगी और कोई नंबर भी मिस नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अब आप लूप भी लगा सकते हैं, लेट्स से। देन थिंक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। W naught varies from the very small value to the very large value, and let's say it iterates over all. For each that W1, there is a W2. For each that W1, W2 pair, there is a W3. That's a 101 nestings. N चलें उसको ना कहें, उसको कुछ और Q कह लें, where Q is the total number of real numbers because you are iterating over that. अगर ऐसा कर भी लें तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, और ऐसा कर ही नहीं सकते इन द फर्स्ट प्लेस। यू कैन नॉट आइट्रेट ओवर रियल नंबर्स। समझ आ रही है? ये जो डब्ल्यूज आप फाइंड आउट कर रहे हैं रैंडम रैंडम रैंडम, ये कितनी देर करेंगे? कैसे श्योर होगा कि जो डब्ल्यू हमने अब निकाला है वो सबसे बेहतर है? ये तो प्रॉब्लम वेरीफाइबल भी नहीं है। यानी अगर आपको कोई डब्ल्यू दे दे और कहे कि दिस इज द बेस्ट, चेक इट, आप तो ये भी नहीं चेक कर सकते। एक तो ये ना कि बेस्ट डब्ल्यू निकालना, एक ये है कि कोई डब्ल्यू ला के दे रहा है आपको ये बेस्ट है, आप तो चेक वेरीफाई भी नहीं कर सकते बेस्ट है कि नहीं। टू वेरीफाई दैट यू अगेन हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन एंड देन कंपेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस yes? यहां पे आती है मैथमेटिक्स आपके लिए। समझ आ रही है? वो कहती है इतने बड़े जंगल में आप घूम रहे हैं, जंगल सोचें जरा, इसको जंगल में क्यों कह रहा हूं, जरा देखें। आपके पास अगर W1 W2 और W3 होते सिंपल, तो दैट W1 W2 W3 इज अ पॉइंट इन सम स्पेस। यस, लेट्स से W1 की वैल्यू होती 2, W2 की वैल्यू होती 3 और W3 की वैल्यू होती 4। तो 2 units, 3 units, then orthogonal 4 units. That's a point in 3D. Yes. W1 W2 W3 की कोई और वैल्यूज, दैट्स अनदर पॉइंट इन 3D। अगर आपके पास सिर्फ 3 वैल्यूज होती, सिर्फ 3 पैरामीटर्स होते, सिर्फ 3 W's होते, W1 W2 W3, you have a full 3D to search. Every location is a candidate. क्लियर है? अगर आपके पास 4 W's हैं, you are wandering in a 4-dimensional space which you cannot visualize. That's okay, but it exists. Our visualization doesn't mean it does not exist. मेरी बात समझ में आ रही है? और इसकी बड़ी आसान एनालॉजी, आप 4 लूप लगेंगे आपके,
You're wandering in that space. Now think about 101 dimensional space. This is a huge space. And everywhere you land, that might be a candidate solution. It's a big jungle. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes? And in practical systems today in data science, can I tell you how many W's are there in a system for this kind of stuff? Billions. In order of billions. I mean, these many things to search, these many numbers to search. So this should appreciate you the methods that finally finds out these kind of things. सही है? अब मैं आपको पहले solution दिखाता हूँ, फिर अगर टाइम हुआ तो हम उसको I drive करेंगे, otherwise lab में drive करेंगे. But first let's see the solution. सही है? Okay. W best is a one-liner in NumPy. Using NumPy, it's one line. This one line is searching the whole jungle and getting the best. For sure the best. There is no other one that is better than that. One line. Very fast. Extremely fast. Okay. Let's see. पहला जो loss आएगा, that is loss on some random values. I mean, आपने carelessly W choose किया था, that is the loss on the, and then the best one. So let's see the difference. Can you see the difference? And not only that, this is telling you that you cannot do better than that. यानी अब अगर ये 871 को देख के आपको गुस्सा आ रहा हो, यार ये क्या बकवास है, तो फिर गुस्सा आता रहे, इससे बेहतर हो नहीं सकता. And that's a good information. That's a good information. You cannot do better than that. Either you have to change the data, increase the data, or do something. Using this method, given this data, that's the best you can do. मेरी बात समझ में आ रही? Yes? Great. Let me run it a couple of more times. By the way, ये हर दफा error change क्यों हो रहा है? Because the data set is not fixed. It's a different data set. But you can see it's like 800 something. And the error on random searching is like, yeah, it's more, maybe double than that. Clear है? Yes? अब अगर मेरे पास 5 मिनट हैं तो I can. Okay. I'm going to do a simple derivation, and then we will see how to actually do this in a more sophisticated derivation in the lab. But here is a simple derivation. I want to solve xw equals y. I want to solve this. Yes. X is n by d plus 1. And y is n by 1. I want to solve this. X is not a square matrix. मेरे पास जो number of features हैं और number of samples हैं, they may not match. It's not a square matrix. अगर ये square matrix होता तो गालिबन मुझे बड़ी आसानी होती, मैं कहता W is equal to x inverse y और मेरे पास W निकल आता. But X is not a square matrix. Yes? Make sense? So what can I do? XW is equal to Y. What I can do, I can multiply both sides by X transpose. अब अगर X transpose को देखें, this is D plus 1 by N, because transpose does that. You know transpose? Okay. And X itself is N by D plus 1. So this X transpose X, this becomes D plus 1 by D plus 1. That becomes a square matrix. Oh my God. Square matrix. Okay. So now what can I do is X transpose X W is equal to
x transpose y, I can multiply both sides by x transpose x inverse. And this becomes identity, and W is found. Make sense? And here this function LSTSQ, least squares, it is exactly doing this thing. I have to relate why this minimizes. I have to relate why this particular thing minimizes this criteria. I have to do that, but that I will do in the lab, where I will drive and connect these things. But that's the solution. That's the solution. And it's simple linear algebra, one-step linear algebra. Make sense? Any questions? अच्छा, नेक्स्ट लैब से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, लैब में आने से पहले एक तो आप सारे लोग काइंडली टाइम पे आए, टाइम पे तशरीफ ले आए, जो भी आपका टाइम है उसमें आ जाएं, लेट ना हो। जाहिर है इमरजेंसी रीजंस तो हो भी सकता है, लेकिन कई दफ़ा हम बिला वजह लेजी भी हो जाते हैं और लेट हो जाते हैं। कोशिश करें टाइम पे आए। दूसरा, कैलकुलस की किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से डेरिवेटिव्स का सेक्शन एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू करके आ जाएं। और अगर आप कैलकुलस अभी नहीं पढ़ रहे तो आपने एफएससी में डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं, डेरिवेटिव्स को एक दफ़ा रिवाइज करके आ जाएं। एंड वी विल बी लाइक रोलिंग ऑन न्यूरल नेट्स, नॉट एन इशू। मेक सेंस? मिनिमम मैक्सिमा शायद नहीं, डेरिवेटिव्स के रूल अगर पढ़ के आ जाएं दैट्स ओके। मिनिमम मैक्सिमा वी विल डिस्कस दैट। यस, ये क्वेश्चन है जी, प्लीज सुने। ये एक सवाल है, प्लीज सुन लें, मेहरबानी आपकी जी। This thing, this is actually computing least squares. NUMPY linear algebra, and NUMPY के अंदर linear algebra package है, उसके अंदर ये function implemented है, least squares, और इसकी implementation वो है जो मैंने ड्राइव की है अभी, इसके अंदर जो implementation है। So it takes x and y and it does all that derives that I have drive, जो मैंने आपके सामने ड्राइव की है, and then it just apply that. Recon. अच्छा, ये अब इसकी स्पेसिफिक्स है। एक कंडीशन नंबर होता है मैट्रिक्स का, वो कंडीशन नंबर बहुत बड़ा हो तो मैट्रिक्स जो है ना वो स्टेबल नहीं होता, वो आई मीन इट्स क्लोज टू इन्वर्टेबल बट नॉट इन्वर्टेबल, स्टफ लाइक दैट। तो वो मुझे कंडीशन नंबर ना यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है ताकि वो जो अपनी न्यूमेरिकल रूटीन है ना उस तरह की चलाए। और अगर ये मैं स्पेसिफाई नहीं करता तो ये इसमें वार्निंग शो करता है, तो suppress that warning, I'm just written this. This is something that you should not consider now. It is just for suppression of particular numerical warning. ये जीरो क्यों है? ये लीस्ट स्क्वायर्ड एरर सॉल्यूशन, ये जो फंक्शन है, it returns multiple outputs, and the output I'm interested is on the first index, W. There are others as well. Okay, बहुत शुक्रिया जी। ये रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करनी है?